बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रब्बी शली सदरी व यस्सली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली. Welcome to learning math skills with Kashif. So our today's topic is quadratic equation, that is from class 10th unit number 1. So it's very important topic और अलजबरा में ये बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं. So let's start our today's topic. So first of all, what is quadratic equation? Any equation with the variable of highest degree 2. With the highest degree 2, we call it quadratic equation. कोई भी equation जिसमें किसी भी variable की, suppose I write this the equation with variable x. It can be y, it can be a, b, c. Highest degree of the variable not more than 2. उसमें highest variable आपका 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ आई राइट एन एग्जांपल, सपोज आई राइट ax plus c is equal to 0. Here the power of x is 1, means this is a linear equation. So a equation with highest power 2 is called quadratic equation. We can call it, हम इसको ये भी कह सकते हैं, an equation with the second degree of variable. So as you know, this is your coefficient, this is also your coefficient, and this is called constant, and this is your x is your variable. So this is your quadratic equation with variable x. Now I give you some examples for your understanding of examples of quadratic equation. If I write 6x square minus 7x plus 17 is equal to 0. So this is your quadratic equation because it is the equation of second degree of variable, means highest power is square 2. I write another equation like 4y square plus 11y is equal to minus 7. So this is another example of quadratic equation in which your variable is y. Your variable is y, but highest degree is the same, that is 2. So condition of quadratic equation is that कि आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए वेरिएबल्स की, वो स्क्वायर में होनी चाहिए, उसकी सेकंड डिग्री होनी चाहिए, या उसको कह सकते हैं उसकी पावर 2 होनी चाहिए. So now come to the what is the standard form of quadratic equation. This is the standard form of your quadratic equation. Means if we have, right, I write this equation here. I give you two examples. So if you look at this example, is this a standard form? Yes. What is standard form? The arrangement, first I will write x square, then I will write x, and then I will write constant. So this is called the standard form of your quadratic equation. Is this a standard form? No, it's a quadratic equation, but it's not a standard form because 7 the constant in this way. If we move the constant in this way, then it can be a standard form. If I want to change this into standard form, we will move this 7 in this way and its sign should be changed. Now this is your standard form. So now next one is, what is pure quadratic equation? A pure quadratic equation called if the value of b is equal to 0. If the value of b is equal to 0 means if there is no value of x, not x is except only, you can understand by a simple example. If I write 49 x square minus 6 is equal to 0, that is your pure quadratic form because we don't have the x variable. Write another example. If we have 6x square is equal to 7, that is also a pure quadratic form of quadratic equation because we have no variable of x. So I hope you understand what is quadratic equation, what is standard form, and what is pure quadratic form of quadratic equation. So let's start our question number 1 of exercise 1.1. So now we have to start question number 1. In this question we have to change this equation into, convert this into standard quadratic equation. So what is the standard form of the quadratic equation?
दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। इस शेप में हमने इस क्वेश्चन को लेके आना है और उसके बाद हमने ये बताना है आइदर दे आर अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। अलजब्रा की बेसिक्स आप क्लास 9th में कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, जिसमें आपने एक्सपेंशन भी सीखी थी, आपने फैक्टराइजेशन भी सीखी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सपेंड इट। हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करनी है। एंड यू नो आई एम डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन, सो जस्ट आपकी रिवीजन के लिए इसको मैं डिटेल में करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई x with x. When we multiply two variables, what we get? X into x, that comes x square, means you add your parts of the variable. Now multiply x with 3, so plus minus 3 into x, that is 3x. Now we will multiply 7 with x, what we get? 7x. And now 7 with 3, 7 3s are 21, that is equal to minus 7. So now we can add or subtract if we have the like variables. So these two are the like variables. Like variables means if the variables are same, then we call it a like terms. मतलब we can add or subtract the like terms. इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम x और x स्क्वायर को प्लस माइनस कभी नहीं करते। ये अलजबरा का एक बेसिक रूल है, जिसमें और ये आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स भी को कभी कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते। मीन एक्स स्क्वायर में कभी भी हम x को या एक्स स्क्वायर में 21 को या 21 को x में हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सिंपली x square, the both signs are different, so what will we do? We will subtract it. The sign of the larger value, that is plus 7 minus 3, 4x minus 21 is equal to minus 7. You can allow to use calculator. So यहाँ पे अगर आपको अलजबरे के रूल की कन्फ्यूजन है, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं है, अलजबरे में आपको वो ग्रिप नहीं है, तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। सिंपली -3 + 7 यू गॉट योर आंसर, दैट इज +4। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आप इसको आंसर ले सकते हैं, बहुत बड़ी साइंस नहीं है ये। सो नाउ वी हैव टू चेंज दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मींस in the standard form, on the left side there must be a 0, so we will move this constant in this way. So when we move any value from one side of the equation to the other side, हम एक साइड से दूसरी साइड पे इक्वेशन के कोई भी वैल्यू मूव करेंगे तो हम उसके साइन को चेंज करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 21 plus 7 is equal to 0. When we move -7 in this way, the sign comes positive. So these two are also like terms, means we can add or subtract. So signs are different, we will subtract it. X plus 4x minus 14 is equal to 0. So this is your standard form of quadratic equation. We can convert this question into standard form. Now the second part of the question is that either it is pure quadratic or not. So it's a pure quadratic. No, it's not a pure quadratic. Means in pure quadratic our x value has 0. उसमें x आपको नजर नहीं आएगा, सिंपली x स्क्वायर और कांस्टेंट की वैल्यू आपको उसमें से मिलेगी। So let's do now the next one. So in second part of this question, I write the question x square plus 4 over 3 minus x over 7 is equal to 1. So now this question is in fraction form. Now एक चीज़ ध्यान में रखें कि मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। अब उसमें से आपने कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, इट्स अप टू यू। आपको जौन सा मेथड आसान लगता है आप उसको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप इसका एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन फॉर्म की तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप इस चीज़ को इधर मूव करके उसका एलसीएम लें, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ मेथड्स, बट विच मेथड सूट्स यू, या वो मेथड जिसमें आपको आसानी लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप कोशिश करें कि आप उस मेथड को अडॉप्ट करें। मैथ में कभी भी ये नहीं हो सकता कि एक क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड यूज़ करने से आंसर डिफरेंट हो जाए। आंसर हमेशा मैथ्स में एक होता है, यूनिक होता है। यही इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है। तो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं सिंपली
एक आसान तरीके से आपको बताऊंगा। इस मेथड से आप क्लास 9th में यूनिट नंबर 7 में भी क्वेश्चंस कर चुके हैं लीनियर क्वेश्चंस के, तो हम इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 7। डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम ले लें, द एलसीएम इज 21। सो वी विल मल्टीप्लाई विद 21 विद ईच टर्म। हम 21 से इक्वेशन की बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई with 21 on both sides. So 21 multiplied by x square plus 4 over 3 minus 21 multiplied by x over 7 is equal to 21 multiplied by 1। मीन्स हमने तीनों वैल्यूज को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। Now simply 3 ones are 3, 3 sevens are 21, 7 ones are 7, 7 threes are 21. So now we get 7 into x square plus 4 minus 3 into x is equal to 21। इस तरह से एक ही स्टेप में आपकी फ्रैक्शन फॉर्म से क्वेश्चन एक आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाई 7 with x square, what we get 7x square plus 7 fours are 28 minus 3x is equal to 21। So now for the standard form move 21 in this way because we need 0 on the right hand side. So 7x square I will arrange it now, minus 3x plus 28 minus 21 is equal to 0. So subtract these two like terms, 7x square minus 3x plus 7 is equal to 0. So this is your answer. So now at the end we have to tell it is a pure quadratic or not. No, it's also not a pure quadratic because we have the value of x in pure quadratic form. The x value is 0. So let's see the next one. So in this question again we have a fraction form, so we have to convert this into standard form, standard quadratic equation. So method, we can choose some different methods. We take LCM and then we will cross multiply, again we will cross multiply, but we will use the same method which we used in the previous part। यानी कि वही क्वेश्चन अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा x and x plus 1। So we multiply the whole equation on both sides by the x and x1। जो आपके न्यूमिनेटर्स हैं हम इससे तीनों टर्म्स को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे मल्टीप्लाई with x and x plus 1 on both sides। So multiply x into x plus 1 multiply by x over x plus 1। In algebra these brackets also written instead of sign of multiplication। So again x into x plus 1 multiply by x plus 1 over x is equal to 6 multiply by x into x plus 1। So now simplify it. Here x plus 1 cuts with x plus 1, here here x cuts with x। So what we left here, x into x plus what we get left here, x plus 1 into x plus 1 and multiply 6 with the x, we will get 6x into x plus 1। So now the fraction form is over now। सिंपल इक्वेशन है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करें, उसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। सो मल्टीप्लाई करें, x को आपने x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 6x को आप इससे मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर एंड
6x. Now these two are the like terms, these two are like terms, so add these two, we will get 2x square plus 2x plus 1 is equal to 6x square plus 6s. Now if you look on the left hand side we have 2x square, on the right hand side we have 6x square. अब आपने इसको एक फॉर्म एक जगह पे लेके आना है, या तो आप इन दोनों टर्म्स को इधर मूव करेंगे या आप इन तीनों टर्म्स को उधर मूव करेंगे, और दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप इन दोनों को इधर मूव करेंगे तो योर साइन शुड बी चेंज, लेकिन हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव चाहिए तो हम ये करते हैं कि हम इन तीनों वैल्यूज़ को इधर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, फिर आप तीनों वैल्यूज़ को उधर मूव किया तो यहाँ पे क्या रह गया 0, एंड हियर वी हैव 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब आप इन तीनों को जब आप इक्वेशन के उस साइड पे मूव करेंगे तो आप इसके साइन चेंज करेंगे, मीन्स -2x स्क्वायर -2x एंड -1। सो नाउ what are the like terms, 6x square minus 2x square plus 6x minus 2x minus 1 that is equal to 0। मैंने सिर्फ like terms को अरेंज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप 6x स्क्वायर से 2x माइनस करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 6x स्क्वायर से 2x माइनस करें, व्हाट वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 is equal to 0. So this is your standard form, standard quadratic equation form. So is this a pure form? No, it's not a pure form because we have x value. So in the pure form, as I already told, in pure form the x should be 0, x की value नहीं होनी चाहिए। So let's see another part of this question. So again the fourth part of this question is also in fraction form, so we will use as the same method we will use in the previous two parts। सेम उसी तरह करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स से आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अब कोई लाइन में नहीं लिखूंगा, वो आपको पता चल गया आपने क्या लिखना है, तो आप उसको जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तो आपने उसको लिखना है। आई विल डायरेक्ट मल्टीप्लाई x माइनस 2 into x with x plus 4 over x minus 2. Here I will multiply x minus 2 into x minus 2 over x, and again I will multiply 4 with x minus 2 and x, and that is equal to 0. So here we will cut x minus 2 with x and here x with x. So now you can multiply here x into x plus 4 minus x minus 2 into x minus 2, multiply 4 with this one plus 4x into x minus 2, that is equal to 0. So open the brackets, x with x, what we get, x square plus 4x, here the sign of minus, so be careful। अलजबरा में जहाँ भी माइनस का साइन आता है वहाँ पे थोड़ा सा आपने एहतियात से काम लेना है। इस माइनस को मैं ऐसे ही लिखूंगा, इस ब्रैकेट को मैं ब्रैकेट के अंदर ओपन करूंगा क्योंकि इस माइनस ने इन सब के साइन चेंज करने हैं। नाउ x with x, what we get, x square, x with minus 2x, now minus 2 with this one, minus 2x and minus minus plus 2 2s are 4. So multiply now 4x with this one, that is 4x square minus 4 2s are 8x, that is equal to 0. Now this minus will change the sign. So x square plus 4x minus x square plus 2x plus 2x minus 4 plus 4x square minus 8x, that is equal to
0. So what we get here, x square cuts with x square, right? Because it is plus and it is minus. So here we get 4x plus 2x plus 6x. What we get? 4x plus 2x plus 2x. These are the like terms. So it means that is 8x minus 4 plus 4x square minus 8x, that is equal to 0. So if we subtract 8x with the 8x, it will cancel each other. So if we arrange it as in the standard form, first we have to write x square, then x, then c. Here x value has 0. So first I will write 4x square then minus 4, that is equal to 0. That is your standard form of equation. And it is a pure form. Yes, it is a pure form because there is no value of x is equal to 0. इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं. अगर हम 4 कॉमन ले लें तो व्हाट वी गेट हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो द सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर जो है वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा. वरना ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, लेकिन क्योंकि हमने क्वेश्चंस को जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके वहाँ तक हमने करना होता है, तो यहाँ से हम इजीली 4 को कॉमन लेके आप उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. सो इस तरह हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, x माइनस 2, एंड डेट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है क्योंकि इसमें x नहीं है, x 0 है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इसमें आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और उसकी डिटेल मैंने आपको जिस तरह लेक्चर के शुरू में बताई थी. सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एट योर होम. इनके घर में प्रैक्टिस करें, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और अलजबरा को समझने के लिए मज़ीद कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होती है. सो एट द एंड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लर्निंग मैथ विद काशिफ. अस्सलामु अलैकुम.